The other big story, will women be allowed to enter Kerala's Sabarimala Temple? The Supreme Court has now referred the matter to a constitution bench. Remember, women between the ages of 10 and 50 are barred from entering the temple, and the apex court is hearing the appeal on whether restricting the entry of women to the temple violates their constitutional rights. Meenakshi continues to stay with us. Meenakshi, okay, we'll just go across to Meenakshi in just a bit. But this is what the constitutional bench will look into, whether banning the entry of women of a certain age in the Sabarimala temple takes away their right to equality, takes away their right to pray. Meenakshi was earlier in the court when the hearing took place, and she's filed us this report. It is a practice which has religious sanctity, and the constitution provision of Article 25 and 26 allows this particular freedom to everybody to practice their own religion as per their own choice. So it is a thorny, contentious issue which will pan out in the foreseeable future. With both sides not willing to relent, perhaps it will be the final opinion of this superior strength constitution bench that will go on to decide the matter either which way. Well, this comes as a big boost to those activists, to those women who've been fighting for right to equality, to end the gender discrimination when it comes to your right to pray, be it at a religious place of worship in any religion. Why should there be different rules for men and women is the thought there. So we saw that first big change begin with Shani Shignapur, with Tripti Desai, with a group of women, was allowed to finally enter after the Maharashtra government gave in to the instructions of the Bombay High Court. That was the first big victory, again with the help of judiciary. That time it was the Bombay High Court. Again, it came the case of Haji Ali, and today it's the Sabarimala. In fact, Tripti Desai, and I was just mentioning her role, she's on the phone line with me. Thank you so much, Tripti Desai, हमसे बात करने के लिए. आज अब सबरीमाला की बात भी अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तक चली गई है. आपका क्या कहना है कि अब वो समय आ गया है कि हर एक मंदिर, हर एक पूजा के घर में कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाए? बिल्कुल ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं होना चाहिए. और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जो सौंपा है, इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये हमारे जीत की शुरुआत है. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दिया गया, इसलिए हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ अधिकार, समानता का अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है. और किसी मंदिर में असमानता हो रही थी, महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा था, पुरुषों को छोड़ा जा रहा था, और महिलाएं अपवित्र है, महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है इसलिए अपवित्र माना जाता है. या अयप्पा स्वामी जी जो है वो ब्रह्मचारी है, ऐसी कई कथाएं बोली जाती है. तो मुझे लगता है कहीं भी जो है वो महिलाओं को पाबंदी नहीं चाहिए. बहुत अच्छा निर्णय जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. हमें लगता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर हमें जो है वो निर्णय देगा. महिलाओं के बाजू से निर्णय होगा, और सबरीमाला में भी सभी एज की महिलाओं को जो है वो प्रवेश शुरू हो जाएगा. जी, आप ने वो लड़ाई लीड करी थी जो शनि शिग्नापुर तक गई, और वहाँ पे तो जीत हुई आपकी, पर उसमें भी हमें बॉम्बे हाई कोर्ट और कोर्ट से ही सहयोग मिला. क्या आपको लगता है कि आज भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग अपना माइंडसेट नहीं बदल पा रहे हैं कि जुडिशरी के पास हमें क्यों जाना चाहिए, ये तो हमारे से ही बदलाव आना चाहिए? बिल्कुल, ये शुरुआत जो है वो हमसे करनी चाहिए. लेकिन एक जो मानसिकता, ये जो माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, शनि शिंगणापुर हो या हाजी अली हो, सभी जगह धर्मों का मुद्दा लेकर आते हैं, धर्म या कस्टम का मुद्दा लेकर आते हैं. वहाँ पे जो है वो भावना विवश किया जाता है. तो ये माइंडसेट बदलना जरूरी है, और ये कोर्ट में ना जाकर मुझे लगता है जहाँ वहाँ के जो ट्रस्टी होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो भक्त होते हैं, उन्होंने ये जो है वो ये खुला करना चाहिए. क्योंकि भगवान ने अगर किसी भक्त में भेदभाव नहीं किया तो ये भेदभाव करने वाले हैं कौन, ये दादागिरी करने वाले हैं कौन? इसके खिलाफ, इस माइंडसेट के खिलाफ ही हमारी लड़ाई थी. और मुझे लगता है कि शनि शिंगणापुर हो या हाजी अली हो, कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो महिलाओं के बाजू से दिया है, उनका फंडामेंटल राइट उसे मिला है. और जल्द से जल्द सबरीमाला का भी निर्णय जो है वो महिलाओं के बाजू से ही होगा. लेकिन उससे पहले उनके जो ट्रस्टी है सबरीमाला मंदिर के, उनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, और उन्होंने खुद ने जो है वो महिलाओं को अंदर छोड़ना चाहिए.
से होगा तृप्ति देसाई जी? हाँ, कोशिश आपकी जारी है, अभी भी चलिए एक बार और ट्राई कर सकते हैं. राहुल ईश्वर is on the phone line as well with us. Rahul Ishwar, I was just speaking with Trupti Desai. She's on the phone line, and we were talking about how even though the change is happening, it's happening via the judiciary in several other cases and not via the people who should actually bring about this change. Why won't you allow entry to all women of all age? There are almost 4 lakh women visiting Sabarimala every year. There is only an age regulation. Yes. That age regulation is purposely distorted and shown as gender discrimination. There are ladies Sabarimala in Kerala. Will any so-called left liberal or feminist who want to visit there? It is in Guinness Book of World Records for the largest congregation of women where 30 lakh women offer Pongala. It is in Guinness Records. It is not like the 300 feminist group where they believe they can talk for the entire woman folk. We are just pointing out that this is just an age regulation. People are misusing to suit their feminist agenda and showing Hinduism and temples in a bad light. No, it's not about one religion, Rahul Ishwar, and you very well know that the same fight is happening at Haji Ali. The same fight will happen anywhere else that tries to bring in any restrictions. At the end of the day, it is to say, if I want to pray at a certain place and if I want to pray to a certain God, why should that right be taken away from me, irrespective of my age? Why should my right be taken away from me to institute a temple and set the particular rituals and rites according to those temples? If you don't like a temple, don't go to that temple. Choose another temple. We are having thousands of temples in India. Why do you want to interfere in a particular temple and change it? तो मेरे एज की महिलाएं मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? They should change. आप क्यों ऐसी पाबंदी लगा? Okay, 1 minute, Rahul Ishwar. Trupti Desai has something to say to you. Okay, Rahul Ishwar, just listen to Trupti Desai. Trupti Desai, Rahul Ishwar कह रहे हैं कि ये मंदिर में मत आइए, कहीं और चले जाइए. उनकी राइट का क्या होगा? ये राहुल जी नहीं कह सकते हैं, ये भगवान ने कहना चाहिए. हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त के नाते भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ पे सबको समान अधिकार मिलना चाहिए. ये जो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को छोड़ते हैं, ये कोई उपकार नहीं करते हैं. भगवान ने सभी को अधिकार दिया हुआ है और अगर महिलाओं को वहाँ पे छोड़ा जाता है तो सभी एज की महिलाओं को वहाँ पे छोड़ना चाहिए. वहाँ पे बिल्कुल आपको उसका देवता का नाम भी पता है तृप्ति जी? ये महिलाओं को मुझे सिर्फ ये बोलिए कि उस देवता का नाम क्या है? मंदिर में जाना है, मुझे अगर दर्शन करना है, मैं अगर भगवान. Okay, my request to both Rahul Ishwar and Trupti Desai, let's try and hear each other out. Now, the judiciary may end up deciding on this case at some point on a constitutional basis, but change will only happen when you, all of us, begin to understand what the other person wants. Rahul Ishwar is asking Trupti ji कि आपको उन भगवान का नाम भी मालूम है जिनके लिए अभी आप लड़ रही हैं? बिल्कुल भगवान का नाम पता है और भगवान के किसी मंदिर में अगर हमें जाना चाहिए, वहाँ पे हमारी अगर श्रद्धा है तो ये रोकने वाले होते कौन है? और इनका माइंडसेट ऐसा क्यों है कि ये महिलाओं ने वहाँ पे नहीं जाना चाहिए? मुझे भगवान का नाम बताइए. नहीं है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है. उस भगवान का नाम तो जरा बताइए. वहाँ की जो है वो प्राइवेट भी प्रॉपर्टी है, तो वो भगवान का मंदिर है. उस भगवान का नाम बताइए तो प्लीज. तो आप ऐसे उस भगवान का नाम बताइए. ऐसे जो तृप्ति जी को उस भगवान का नाम तक नहीं पता. तृप्ति जी को उस भगवान का नाम तक नहीं पता और वो कह रहा है कि ये राइट टू प्रे है. It is okay. 1 minute, Trupti Desai. 1 minute, Trupti Desai. Allow me this, please. Allow me this. Rahul Ishwar, at the end of the day, it is about somebody's right to pray. Somebody who wants to go there. Somebody who's had to go to the top court today to ask for that right. My question to you is, at some point over the past few centuries, what if somebody decided, Rahul Ishwar, that the women of this age group are impure and shouldn't be allowed? Before that it's fine and after that it's fine. These are purposeful lies, madam. I personally thank Mirror Rao for arranging this debate. Trupti Desai ji ko us bhagwan ka naam tak nahi pata. Trupti ji us No, explain to us the other thing which you always say is misunderstood. This is my time, right? This is my time. Yeah, Trupti Desai, 1 minute. Trupti Desai, let him now make his point. अयप्पा स्वामी के मंदिर में सबरीमाला टेम्पल में आना है तो आप कई चर्चा अलग अयप्पा स्वामी जी के मंदिर में सबरीमाला में आना है तृप्ति देसाई को. राइट जो है वो आपके ट्रस्टी छीने जा रहे हैं यहाँ पे. तृप्ति, just listen to Rahul Ishwar, please. My request to you, तृप्ति जी, एक बार अब उनका जवाब सुन लीजिए.
See, I thank Nirano for this debate because it clearly exposes those who say that there is a right to pray, doesn't even know the name of the particular deity or god sitting there. The name is Ayyappa or Manikanta. She said that. Rahul Ishwar, she said that because you both were yelling at each other. You probably didn't hear it. She said it. And I don't think it's okay. So let's not bring down the level of the debate to that now. Let's talk about a larger issue, and you know what I'm talking about. The larger issue is... Why is the rule there? The larger issue is a constitutional issue. Yes. Article 25 and 26 gives me right or gives the believers right to create a temple and to create a particular rule and regulation according to that. And please remember, temple is not a park. हमें वहाँ नहीं जाना है, वहाँ पे हमें आना है तो हम आप बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं. वो आपको अधिकार नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने. मुझे अधिकार दिया आर्टिकल 25 और 26 ने मुझे अधिकार दिया मैडम. मुझे अधिकार दिया. आप सभी को रोकना है तो आप सभी को रोकिए. वहाँ पे क्यों सभी को प्रवेश दिया जा रहा है? आपको अगर किसी को पाबंदी लगानी है तो वहाँ पे किसी को मत छोड़िए. आप ही 4-5 जन बैठिए. वो हमारा डिस्क्रिप्शन है मैडम. ये बोल रहे हैं हमारे टेंपल है. Okay, Tripti Desai. आपको कोई मंदिर बनाना है. Rahul Ishwar, you're taking the discourse to a direction that I know you don't want to. You don't want to sit here and say it is my decision whether I want to allow you to enter or not. Please don't misquote me. Yes, exactly. So don't say. So then you don't go ahead and say that it is up to the discretion of the person who's running the temple, because it's not. It is the discretion of the deity. The discretion of the deity. You are not the person who has the right to interpret what the deity wants. That's the point that Tripti Desai is making here. Kerala High Court did. Leave me, I am a mere mortal. But 1991 Kerala High Court accepted our argument and said that Ayyappa is a Naishtika Brahmachari, so young women are not allowed. Please remember, even Supreme Court judges, majority of judges who heard this case were supportive of us. मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो बिल्कुल महिलाओं के बाजू से निर्णय देगा. ईश्वर और इन लोगों की बिल्कुल दादागिरी वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगी. We will definitely see, and please remember one more thing. In Haji Ali you lost. Contrary to what people say, Haji Ali was a failure for the feminists. And even right now, no female is allowed to particular mother. तो मुझे लगता है ये गलत बात कर रहे हैं. Please don't lie. Haji Ali was a failure. We are proud of our brothers in Haji Ali who fought a spirited case and won the fight for Article 25 and 26. In Haji Ali, the trust came back with a solution where they said that the rules will be made the same in terms of reaching out, in terms of entry. Rahul Ishwar, they said we will make the rules the same, whichever way, whether it's the ban or it's the entry, it's equal. And till today, any woman be able to touch the mazar? And till today, did any woman touch that particular mazar or particular Sufi? पुरुष और महिलाएं जो है वो मजार तक जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ पे समानता है, वहाँ पे इक्वालिटी है. For Muslim brothers in the point is equality, whether it's a ban or it's access, equal access. Rahul Ishwar, of course, the top court will have to decide, because you and I or Tripti Desai together. को जो अगर ऊंचा स्थान दिया है तो वहाँ पे महिलाओं का अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दिया हुआ है? कौन महिलाओं को अपमान कर रहे हैं मैडम? ये सिर्फ एक मेल कॉलेज और फीमेल कॉलेज की तरह ही है. आज मेरा सिर्फ एक मेल कॉलेज और फीमेल कॉलेज की तरह है. अगर आपको मिक्सर कॉलेज में पढ़ना हो तो वहाँ जाके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं इस पे. मगर सभी इंस्टीट्यूशन मुझे बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है. और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो, महिलाओं की जीत. Yes, all right. Tripti Desai, thank you for joining us. Before I let you go, Rahul Ishwar, I want to understand from you. The basic charge is, why is it that even if you say that the deity is a brahmachari, do you think the god is so weak that women of certain age will go and distract him? Is that the logic that you genuinely believe in? The other way around. When we say deity is Naishtika Brahmachari, that doesn't mean deity has any problem with women. So why are women not allowed then? So why are women of a certain age not allowed to go near him then? Should keep away from all the laukikata.
It's a symbolic way of telling that all the devotees should observe this 41 days vrata, and this is well documented in High Court verdict. This theory was substantiated by none less than Vivekananda in 1895. The famous book Raja Yoga. This is Kundalini Yoga and for the creation of Ojas. This is a very deep matter, but one thing I agree with you. We should definitely take in constitution and culture into a balance. Article 26 and Article 14 into a balance. We hope Supreme Court will have that fine balance between Article 26 and Article 14. Okay, all right. Point taken there. Point taken. I understand what you're saying. Thank you so much, Rahul Ishwar, for speaking to us. We'll, of course, have many conversations as Supreme Court's constitutional bench now looks into this issue.